Hello, good morning, dear students. How are you? So, hope so that you would be fit and fine at your home. So, in last lecture, we discussed about infinitives. Okay, and we know that infinitives we have of two type with two and without two. Okay, so on that day we discussed about two plus infinitive. Okay, so there are another type also in which is known as bare or plain infinitive. Okay, so what is the meaning of this? That we do not use to here, means ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ to plus to ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Okay, so one we have to plus first infinitive. Okay, and then without to means ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ first form ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ. Okay, so how you will come to know that you have to avoid to? So after some verbs like, so these are some verbs ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ to ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ. Watch, bid, see, let, make, help, hear, feel, etc. Okay, so here example, she felt her hair rise on the back of her neck. So here you can't say that she felt her hair to rise. Okay, so ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ feel ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ to ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇਗੇ. So here felt, so ਇੱਥੇ to rise ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, so ਕੱਲਾ rise ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ. So I heard her gasp. Okay, so here you can't write her to. Okay, he bade me come, so you can't say that he bade me to come or he bade to me come. Okay, so the here we will use bare infinitive. Let him go, let him to go, it is wrong. The officer made me to wait, it is wrong, so you should say me wait. Okay, so if we have had better, had rather, had sooner in the sentence, then also you will avoid to. You had better go home now. Okay, you can't say you had better to go home now. Similarly, sooner to stay, only sooner stay. Rather to go, it is wrong, you should say rather go. Had rather to speak, okay, had rather speak. Okay, so here it is a preposition, don't mind it, here it is a preposition, not infinitive. Then we have another situation when we have given auxiliary or modal verbs. Okay, so all these are modal verbs. So tell him he may come tomorrow, may is modal, shall modal, dare, need, will, all these are modal. So with modal verbs we do not use to. So you can see clearly nowhere in these example to is used. Okay, so with some preposition, there are some preposition, not with all the preposition. Okay, so example, if there is except, but, save, then. Okay, so here except complain, you can't say that except to complain. Okay, what could he do to save? So could is also, what could he do save, scold the girl. Okay, I would rather die than beg. So here you can't use, so you can see then to beg, it is wrong here. Okay, so with the save also, okay, so it is not, they have not given only preposition, except with but also, save also, then also. After these we do not use to. Okay, so one more thing will help to know, that is the reading, that is the conscious reading. So as much reading you will do, as much you will read, study, okay, you will get the concept clarity. So this is the only way to improve in the grammar. Okay, practice, practice, practice.
Okay, so here perfect infinitive. So this is the another type of infinitive. Perfect infinitive means when we used to have. Okay, so to have, then third form. I pretend to have forgotten all. I am sorry to have failed in the mission. So another type of infinitive we have passive form. How to use passive infinitives in the passive form? She likes to be flattered. It is an insult to be treated like that. So how to write passive infinitive? To, be, and past participle. So you use it in your writing, but you might not be aware. So keep in mind. Okay, and one more thing, students, I want to request you, or you can take it as a suggestion. Okay, these things will help you a lot, okay, in your fifth question of grammar, especially the D portion. Okay, so please keep in mind this sentence structure. The inner sentence structures ਨੂੰ please note ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ. Okay, so as many structures would be there in the mind, so that much it would be easy for you to think in the exam. तो जिन्ने भी structures ਦੀ knowledge ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ sentences ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ expressions ਲਿਖਣੇ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋਣਗੇ. Okay, so this was the end of the infinitive. So now the answer key of the exercises which were given to you, okay, in the last lecture, okay, so that is uploaded. Okay, you can check in your that homework app. So I have uploaded the answer keys over there. Okay, so these exercises. Okay, so our next topic is gerund. Okay, so it is also a kind of non-finite verb. Okay, so what is gerund? Okay, so a gerund is that form of verb which ends in ing. ठीक है, एक verb ਜਿਹੜੀ ਕਿ ing ਤੇ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ and has force of a noun. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਨਾਉਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ? ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ verb plus ing, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਉਨ ਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦਾ ਵਰਬਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ing ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ing ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, अगर वो वर्ब नहीं होएगा तो की होएगा? नाउन होएगा। ठीक है, या फिर वो की है प्रेजेंट पार्टिसिपल होएगा जेड़ा की कादा काम करता है एडजेक्टिव दा। सो वो आप डिस्कस करांगे आफ्टर द जेरेंड नेक्स्ट लेक्चर दे विच। सो अज दा जो अपना टॉपिक है वो है जेरेंड। सो लेट्स डिस्कस। ओके, so it has the same form as the present participle. So there is a difference between gerund and present participle, क्योंकि present participle ਉਹ ਕਾਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜੋ gerund ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾउन ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜੈਰੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾउन ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਨਾउन ਕਿਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨਾउन ਦੇ। ਤਾਂ ਨਾउन ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਨਾउन ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੈਰੰਡ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਰੰਡ ਤੇ ਨਾउन, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਦਿਖਦਾ ਵਰਬ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਨਾउन ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਨਾउन ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੀਨਸ ਜੈਰੰਡ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜੈਰੰਡ ਐਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਹਿਮ ਮੀਨਸ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਟਰਬਲ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ favorite pastime. Okay, so you can see here inviting him means, so here it is a subject, swimming is favorite pastime, it is his favorite pastime. Okay, so it means pronoun, pronoun की जगह तो यूज होंगे नाउन की जगह ते।
ठीक है, मीन्स हेयर स्विमिंग इज ए नाउन। सो सेम डांसिंग इज हर फर्स्ट लव, इट इज हर फर्स्ट लव। सो ये रिप्लेस करता पे प्रोनाउन ਨੂੰ। प्रोनाउन ਕਾਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ यूज ਹੁੰਦਾ, नाउन ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤਾਂ नाउन ही ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, seeing is believing। सो सेम एज ए ऑब्जेक्ट किमें काम करते हैं। सो गार्डनिंग, आई लाइक गार्डनिंग, ठीक है। सो मैनू बागबानी करना चंगा लगता है। आई एडमायर योर टेकिंग इट लाइटली, आई रिमेंबर हेयरिंग यू over the radio, she likes eating rice, she likes driving a car। okay, so take care of this thing कि हाँ इत्थे की काम कर रहे हैं, एक या एक नाउन का काम करते पे। ओके, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हाँ ये पार्टिसिपल है। ओके, सो नेक्स्ट इन द लेक्चर मीन्स एट द लास्ट ऑफ द लेक्चर तुहानू की फर्क पता चल जाएगा कि हाँ ये पार्टिसिपल है, ठीक है, या जेरेंड है। अगर जेरेंड है तो क्यों, तुहानू पता लग जाएगा। सो वन एक्सरसाइज इज देयर, आफ्टर दैट एक्सरसाइज यू बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टिसिपल एंड द जेरेंड। सो इट कैन वर्क एज सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है, मीन्स सब्जेक्ट हिज चीफ डिलाइट इज कुकिंग, हिज चीफ डिलाइट इज कुकिंग। सो चीफ डिलाइट एक ही सबजैक्ट है, तो कुकिंग उन्होंने किया उहदे अर्थ नूं पूरा कर रहा है। कंप्लीमेंट मीनस पूरा करना। माई हॉबी इज पेंटिंग, तो माई हॉबी, ठीक है, ये सबजैक्ट है, तो पेंटिंग सबजैक्ट नूं पूरा कर रही है, तो इस तरह की सबजैक्ट नूं पूरा करने का काम भी करते हैं। सो एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रैपोजिशन, सो फ्रॉम गोइंग देयर मीनस प्रैपोजिशन तो बाद इनू किया वरत्या जा सकता है। of traveling, of marrying her, of fishing। so you can see these examples, definitely you will understand these। okay, gerund as a part of noun phrase, ठीक है, gerund as a part of noun phrase भी काम करते हैं। noun phrase, so here up to here photographing of wild animals। noun phrase means a group of word, phrase ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮੂਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। okay, so group of those words in which there is no subject helping verb, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ helping verb subject ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੀ ਆ, group of words ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ photographing of wild animals, okay, is prohibited here। playing on this field is enjoyable। so ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ, these are the phrases, noun phrases। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ing ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ, ਜੈਰੈਂਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ, ਨਾउन ਫਰੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। So one more thing you have to take care, here article the is omitted if the noun phrase contains a preposition other than of, ठीक है, मीन्स दा नूं की है ओमिट कर दिता जाता है अगर प्रैपोजिशन ऑफ नूं छड्ड के कोई भी अदर प्रैपोजिशन है। द टेमिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल, सो यू कैन सी हेयर, ओके, दा इत्थे लग्या होया वा, सिर्फ ऑफ दे नाल दा लगदा वा। अगर ऑफ तो बिना कोई होर प्रैपोजिशन हैगी आ, जंपिंग टू द हैज़ कंक्लूजन, सो इत्थे द नहीं लगाया जा सकता क्योंकि द सिर्फ काहदे नाल लगदा वा, ऑफ दे नाल। ओके, सो नेक्स्ट इज जेरेंड एज ए पार्ट ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन मीनस दो नाउन नूं मिल के, ठीक है, एक दो नाउन मिलके एक शब्द बनाते हैं तो उसनूं कंपाउंड नाउन कह दिता जाता है। ओके, सो आई गेव हिम अ वॉकिंग स्टिक। सो ए स्टिक यूज्ड फॉर स्पोर्ट, नॉट a stick that walk। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, so I told you that next in the lecture you will come to know what is the difference between gerund and participle। ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ walking ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, adjective ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। okay, but here walking is not walking stick। walking stick ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ adjective ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਸੀ stick ਜੋ ਖੁਦ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, पर स्टिक खुद नहीं चलती, मीनस वो स्टिक की है तुरन के लिए वरती जाती है।
ठीक है। सो ये इत्थे की है नाउन का काम करती पई है। सो हेयर नॉट ए स्टिक दैट वॉक, अगर तुसीं इहनूं की है एडजैक्टिव समझोगे तो मीन स्टिक खुद चल के जाती है, पर स्टिक इस तरह नहीं हो सकता। रीडिंग रूम मीनस एक ऐसा कमरा जिथे तुसीं पढ़ते हो, दैट इज रीडिंग रूम। ये नहीं कि हाँ कि कमरा खुद पढ़ता है, अगर तुसीं रीडिंग रूम नूं रीडिंग नूं एडजैक्टिव की तरह ट्रीट करोगे तो उसका मतलब की हो जाएगा, मीनस एक ऐसा कमरा जिहड़ा कि खुद पढ़ता है। ओके, सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। तो पैसिव फॉर्म जैरेंट की किवें बनती है, बीइंग मसाज, तो उत्थे की है बीइंग वरत्या जाता है, जिवें आप एक्टिव पैसिव दे विच करते हैं कि आई एन जी हटा के आप बीइंग लगा देंगे, तो सेम रूल इत्थे अप्लाई किया गया है। ओके, तो मसाजिंग का की बन गया बीइंग मसाज्ड, स्टेयरिंग का की बन गया बीइंग स्टेयर्ड, ओके, ट्रांसफरिंग का की बन गया बीइंग ट्रांसफर्ड, एडवाइजिंग का की बन गया बीइंग एडवाइज्ड। सो perfect form, gerund in the perfect form, so having done, so perfect means has have, ਤਾਂ has ਦਾ has ਦੇ ਨਾਲ ing ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ओके, so having, having been, having heard, ठीक है। so these are perfect forms। gerund in apposition of a noun, apposition means ऐसे शब्द जो कि है इक्को नाउन बारे गल करन, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾउन ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਹਰ ऑफेंस, ਸਟੀਲਿੰਗ ਦਾ ਨੋਟਸ, ਤਾਂ ਸਟੀਲਿੰਗ ਦਾ ਨੋਟਸ ਤੇ ऑफेंस ਇੱਕੋ ਗੱਲ। ਸਟੀਲਿੰਗ ਦਾ ਨੋਟਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਹਰ ऑफेंस ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ। ਸੋ ਬੋਥ ਆਰ ਰੈਫਰਿੰਗ ਟੂ ਵਨ ਵਰਡ ਓਨਲੀ, ऑफेंस। ਸੋ ਜੈਰੈਂਟ ਕੀ ਆ ਇਨ ਐਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਰੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ठीक है, इनफिनिटिव दे नाल। किवें, स्मोकिंग इज बैड, टू स्मोक इज बैड, तो इनू की है जैरेंट नू काहदे नाल रिप्लेस किया गया है, इनफिनिटिव दे नाल। ओके, आई लाइक टू डांस, आई लाइक डांसिंग। सो दीज आर द सम केसिस ओनली, इन्हां दे कोई रूल नहीं हुंदे कि। सो सिर्फ अगर रीडिंग करते रहोगे तो तुहानू की है इन्हां बारे पता चलता रहेगा। Okay, so now students, one exercise, okay, so some practice exercises are there which you have to solve। okay, so exercise 5, exercise 6, 7, so here you be able to find out the difference between gerund and adjective, so try to solve it yourself। okay, and here in this exercise you have to rewrite the following sentences by changing the infinitive to gerund। ठीक है, जिमें लास्ट एक्सरसाइज स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट टू स्मोक इज बैड हैबिट, सो सेम कि हाँ इनफिनिटिव नू जेरेंट दे नाल की रिप्लेस करना। okay, so hope so that after this lecture, okay, you be able to solve these exercises। so tomorrow I will upload the answer key of these exercises। okay, and we will also discuss the next topic, that is the participle। so this is the end of the lecture, so thank you and have a nice day।